Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we will take a look at a natural science-based passage. I have labeled it as a passage, practice RC passage of the H5N1 virus. So without further delay, let's go take a look at what the passage is. Okay, so if you haven't attempted the passage, I would recommend that you pause this video here, read it entirely, also solve the questions, and then you can start discussing what this passage is all about. Okay. So generally, first of all, the first thing that you should take away by looking at this passage is the sheer length of it. ठीक है? इतना सारा length है, and also right from the first couple of paragraph, you can gain an understanding that it is a very factual one, uh, discussing something about this H5N1 virus. मतलब ये biological sciences, natural sciences, animal sciences इस science based category का ये passage है. So one thing to always keep in mind regarding such RCs is that they can go really heavy on the information point of view. Okay, ढेर सारा information upload करता है ये readers के ऊपर में generally. And here जैसे ही आप passage देखते हो, you take the first look at it and you can suspect that it is going to happen because of the sheer length. ठीक है, the author is not a stupid person to simply write a very long passage and not giving you a lot of meaningful information. ऐसा generally होता नहीं है कि circular बात घूम रही है. Every new paragraph starts coming in with new information. So that's why in this case you need to go ahead and use your pen and paper to jot down the ton of information given here. Okay. If you come from bio background, let us say we have some people coming from biotech, BSc biotech, zoology background even. So in that case, what you can do is maybe this passage would be an easy deal for you. But other than that, for people coming from non-biology background, please do not try to hold all this ton of information in your mind while going through the RC. It will end up either slowing down you badly, hampering your speed, or maybe even lead to a lot of confusion and your attempts going wrong. So the reason I'm making this video is to give you an exposure, to give you an idea regarding कि ऐसे passages का information plot कैसे किया जाता है. ठीक है. So for the first couple of paragraphs, if you read, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं बोला. It's just given कि इजिप्ट में a new strain of H5N1 virus seems to be going around and affecting people. ठीक है. Sharp increase in human cases भी हुए हैं. So one thing is clear that humans are also infected with this virus, but whether this new strain is affecting humans in some particular fashion or not, that is not 100% sure. So you have two sides of the coin right now. Humans getting infected largely and new strain in the house. But whether that new strain has gone into human beings, sort of a mystery. Second paragraph also doesn't give you brand new information. From the third, fourth para, new information starts coming in. Technical knowledge given here कि जो new virus का analysis किया गया, scientists went and collected some isolated strains of virus, samples of virus, isolates. Strain was the wrong word, please ignore that. Some specific 29 samples they have collected, and now they are starting to analyze कि ये कैसे बने हुए, इनकी बनावट कैसी है, what are their building blocks. So technically what happens is कि इतने बड़े वायरस का एक proper family tree होता है, उसमें there is this major subdivision called as clade 2.2.1.2. So let's put it at the top. Why? Because the information given to us is कि this new strain belongs in a separate cluster within this clade. मतलब कि इसको लिखने का तरीका will be something like this. Current strain is a separate cluster. Okay. And we are also given that there are other strains, okay, within the same clade, indicating that the new virus represents a distinct cluster which may have originated from previously circulating viruses from the same clade. मतलब कि इसको plot करने का some तरीका like this, that there might be some 2, 3, 4 other clusters also present in the same clade, but the current one right now is a completely separate guy and seems to be going around. ये बंदे आपको मिले नहीं है अभी तक सोसाइटी में ज्यादा. So what does this indicate? This indicates this written over here, indicating that the new strain has become predominant. मतलब अभी आपको सोसाइटी में मैक्सिमम ये स्ट्रेन मिल रहा है. ये XYZ A, there may be 3, 4, 5, 10, whatever. We are not concerned with that. ये बंदे आपको नहीं मिले अभी. They exist. They are there in nature, but
दे आर नॉट डोमिनेंट, दे आर नॉट गोइंग अराउंड अभी कौन है, ये नया पंटर, ठीक है। The researchers also then went ahead, collected it from infected humans and determined कि yes, ये न्यू क्लस्टर है, जो वायरसेस मिले हैं इसी सेम क्लस्टर के, मीनिंग ये सेम ग्रुप का उनको मिला है। Then in the last paragraph over here comes some really strong information which you should jot down, not try to hold in your mind. What does it say? Let's use a different color. Okay. कि इस न्यू क्लस्टर की खासियत क्या है, ठीक है। दैट इट हैज दिस न्यू अमाइनो एसिड, क्या नाम है इसका, K373R, ओके, न्यू अमाइनो एसिड, ओके। एंड कौन से सीरीज का ये, इट इज HA सीक्वेंस का, ये भी लिख देना चाहिए वहां पे, HA सीक्वेंस का है। इट इज नॉट फाउंड इन अदर्स, ओके, तो ऐसा भी लिख देंगे, K373R नॉट फाउंड, या फिर है तो बहुत रेयर है। पैसेज इज नॉट सेइंग नॉट फाउंड, इट इज सेइंग विच इज appeared only rarely in other in the past, okay, so rare here, okay, so this takes care of the information given in the last paragraph here, ठीक है। इट गिव्स अस एडिशनल ज्ञान ऑल्सो कि 3 अदर म्यूटेशंस ऑफ द स्ट्रेन, मतलब इसके अंदर में और 3 म्यूटेशंस है, बट इट्स कोई खास बात नहीं है। दीज म्यूटेशंस हैड बीन सीन इन अर्लियर वायरसेस, अर्लियर क्लेड वर्जन्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, these 3 mutations are a point of similarity, so I am taking a bit of a risk holding it in my mind, not plotting here, otherwise it will become very messy, not able to make sense. Moving ahead, let's go later. What does the author say? कि regarding this mutations, we do not expect mark blah 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 up to this string. So technically speaking, this paragraph काफी heavy है regarding the jargon that I has thrown, and unfortunately, as a non-biology guy, I cannot understand what this wants to say. ठीक है? So from the point of view of a regular aspirant and average aspirant, you need not be afraid of, you need not be you need not start panicking कि अगर कोई certain part of passage आपको ना समझे तो। Even I am not 100% clear what this tried to say, ठीक है। Just seems that कि कुछ तो इन्होंने रिसर्च करके कंफर्मेशन मिला है उस चीज का, ठीक है। ऑल राइट, सो व्हाट आई एम अवेयर अबाउट इज कि इस पार्ट के ऊपर में क्वेश्चन आया तो 99% आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट, बट डज दैट स्टॉप मी? नो इट डजंट, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो न्यू स्ट्रेन है, ये न्यू क्लस्टर है, इसमें इनको 4 अमाइनो एसिड फिर से न्यू मिले, बट कहा NA जीन। अभी हमने HA जीन में अमाइनो एसिड ये देखा था K373, कुछ और इनको मिला है in this new strain going on. So what have they found? They have found 4 new amino acids in the NA gene, ठीक है। अभी नाम नहीं दिया है, जिस तरीके से K373 दिया था नाम, यहाँ पे चारों के नाम नहीं है, बट व्हाट वी नो इज कि ये नॉट फाउंड हियर, ये बात आप कॉन्फिडेंस के साथ में लिख सकते हो, ओके। एंड देन फाइनली व्हाट इज गिवन टू अस कि एक दूसरा भी क्लेड इन्होंने अब थोड़ा सा यहाँ पे एस्पायरेंट के साथ में मस्ती करना शुरू कर दिया। whoever made this RC passage is trying to worry you by giving you some additional ज्ञान here कि एक और क्लेड था भाई 2.2.1.1, बट अब तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1.2 के बारे में बात कर रहे हैं। बट देयर इज दिस 1.1 वाला क्लेड जो 2007 में आया था, बट कुछ खास दम वाली बात नहीं है, डिसअपियर भी हो गया, डिड नॉट रिप्लेस 1.2, द वन व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, एंड डिड नॉट कॉज एनी सब्सटेंशियल ह्यूमन इन्फेक्शंस आल्सो। सो इन अ वे दिस पार्ट इज जस्ट टेलिंग अस कि प्रीवियसली एक 2.2.1.1 नाम का क्लेड एग्जिस्ट किया, बट कुछ खास दम वाली बात नहीं थी, ओके। So bringing back the discussion to a focus wala clade here, 1.2 wala punter, regarding that what is the researcher saying? They are saying कि हमको यार अभी ना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि क्या ये न्यू स्ट्रेन के अंदर में ऐसी कोई बात है, क्या ऐसी कोई खासियत है which helps it jump to humans more easily, and not sure about it. Definitely recent increase हुआ है H5N1 cases में, but can we put the blame for that increase on this current strain या फिर on its new features that it seems to have compared to उसके दूसरे cousins जो different features इसके अंदर है, इसके वजह से ये humans पे भाग रहा है क्या, इसकी वजह से is it able to infect human beings?
that is not clear. Okay, they are simply saying कि possibility cannot be ruled out, हो भी सकता है, but फिलहाल हमारे पास में कोई information नहीं है guarantee देने का. So this part of the passage is the proper conclusion and you should remember it in your mind कि whatever research has been done पूरी guarantee अभी तक नहीं मिली है. ठीक है. So with that in mind, I would recommend that you jot this tree or this infographic type scene that we have created in your book, and then let's try to hit the question, see how many you can crack. ठीक है. तो इस तरीके से you ensure that you do not burden yourself with so much information given in the passage. Okay, चलो let's go to the questions now. What is the main purpose of the author of passage? Okay, बहुत सारा information दिया है, but broad takeaway is what? New strain of virus seems to have come to the fore. But क्या वो वायरस के अंदर कुछ ऐसी ताकत है जिसकी वजह से it jumps to humans more easily? Don't know. Not able to prove it. May be possible, may not be. So an option which reflects this is your good choice here. Option A takes away the cake. Very really good, well worded. Elaborate on the new strain of H5N1. Yes, we are specifically discussing the new strain, and to debate or discuss the possibility कि क्या उसके अंदर ऐसी बात है which allows it to jump from this poultry, avian मतलब poultry, to humans. Yes, वही तो सारा गेम चल रहा है कि this new strain के अंदर कुछ शायद different features है. They may or may not help that virus go to human beings. Yes, seems like a really good candidate. Preferably, we will want to go ahead and mark it as the answer. Still, let's see why the other options are not the answer. To present a case study on H5N1, this is where a problem comes. H5N1 too broad a term. हम इसका particular एक strain के ऊपर ही discuss कर रहे हैं. We are not discussing the entire family. And to provide statistical evidence of death caused in humans, wait a minute, what? No numbers have been given whether humans have died or not. Infections हुए बस इतना पता है, डेथ का तो नाम भी नहीं लिया है दूर दूर तक. So bye bye bro. Option C, analyze whether H5N1 can be transmitted to humans or not. ये भी नहीं हुआ है. It might seem like a trap, but no. H5N1 definitely human beings पे गया है. अब कौन सा strain गया है और किस तरीके से गया है, that we are not sure about. And what does it say? H5N1 गया है या नहीं. So very bad call. Option C out. D again very really good trap laid out there, but again cannot be the answer क्योंकि हम H5N1 पूरे वायरस को डिस्कस नहीं कर रहे, इसके स्पेसिफिक न्यू स्ट्रेन को ही. So if this option had stated to present research data on the specific new strain of H5N1 virus, then it could have been the answer. But unfortunately, that's not the case. That's why it gets kicked out. ठीक है. So I hope that you have understood this question and the reason for option A being the answer. ठीक है. If any doubts, please let me know. Next question. ठीक है. You look at the question, you look at that option, kind of scary. बहुत सारा डेटा है. कोशिश करते हैं. How is the predominant strain of H5N1? कौन है predominant? दिया है हमको. New strain is predominant. मतलब जिस पंटर की हम बात कर रहे थे, जिसने न्यू क्लस्टर बना के रखा है, HA और NA में न्यू, उसके पास में कुछ अमाइनो एसिड्स है, तो ये बंदा डिफरेंट कैसे है नॉन प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन से. मतलब कि दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग अस दिस थिंग कि हाउ इज दिस पंटर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कजिन्स XYZA. तो वेरी सिंपल ना जॉब कि उसके पास में कुछ ऐसे 2-4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है HA और NA में जो इनके पास में नहीं है. That's it. Anything else we cannot say with guarantee. ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि K373 यार रेयर है, यहाँ पर 100% है, और अमाइनो एसिड्स तो Na वाले 4 न्यू फाउंड हियर ओनली, दे आर नॉट फाउंड हियर. ओके, तो let's go take a look at which option gives us this information. So very thankfully option B gives us this, very straightforward. Unlike the non-predominant H5N1 strain, मतलब हमारे वो X, Y, Z, A ये वाले पंटर्स, जो अभी वाला हमारा predominant बंदा है, it has an amino acid change in HA sequence and मतलब single K373R. We are talking about this. Is it HA sequence? Go back to the passage, confirm. Yes, 1 amino acid, definitely correct. And 4 amino acid changes in the Na sequence. एकदम सही बात यहाँ पे दिया है.
तो ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग डेटाबेस क्वेश्चन, बट इफ यू हैड मेड सच अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्री तो आपको ये 1 मिनट में जम जाता था. Okay, I am a very poor person when it comes to biology knowledge, but I could crack this question simply on the basis of making that tree. Answer is this. बाकी ऑप्शन तुरंत देख लेते हैं why they cannot be the answer. Only the new H5N1 strain has increased binding to human type flu virus receptors. No, no, no. Whether it is doing that or not, यही तो सारा का सारा डाउट में है. क्लियर कट आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि we cannot prove. It is hard to assess whether or not this is happening. तो आंसर नहीं हो सकता. सी, अनलाइक द नॉन प्रीडोमिनेंट H5N1 स्ट्रेन. ओके, मतलब XYZA अगेन, उनसे क्या डिफरेंस है हमारे अभी वाले बंदे में? इट हैज 4 अमीनो एसिड चेंजेस इन द HA सीक्वेंस, 4 इन द NA सीक्वेंस. उप्स, एक वन सिंगल वर्ड एंड द ऑप्शन कोलैप्सेस. इट इज नॉट 4 इन HA, इट इज ओनली 1. ठीक है, बाकी पूरा ऑप्शन एकदम सही है, बट बेचारा एक वर्ड की वजह से गेट्स थ्रोन आउट. ओके, एंड देन कमिंग टू डी, अनलाइक प्रीडोमिनेंट ब्लाब्ला XYZA वाले बंदे, H5 predominant H5N1 strain. Okay, there seems to be a typo here. It should be non-predominant. My bad. Sorry. So unlike XYZA वाले बंदे, predominant H5N1 has 3 mutations in HA which alter the binding. No way, boss. I don't care what is given later. There are no way 3 mutations in HA sequence. Okay. हमें क्या दिया है? 3 other mutations in the strain are associated. That's it. But whether those 3 mutations are in the HA sequence or not, we don't know. एक बहुत बड़ा डाउट वहां पे आ गया है. ठीक है, प्लीज पे क्लोज अटेंशन. वेदर दिस 3 mutations are in the HA sequence or not, वो नहीं पता. 3 mutations definitely है. Read this part clearly. 3 mutations are associated with increased binding in this. ये एकदम सही लिखा है, increased binding in human type flu virus blah blah blah. ठीक है, बट वेदर दोज आर पार्ट ऑफ HA सीक्वेंस नहीं पता. और दूसरा दूसरा देखो, अनलाइक नॉन प्रीडोमिनेंट, मतलब ऑप्शन डी सेइंग ये जो 3 म्यूटेशंस है ये डिफरेंस है तो दो ग्रुप्स में, XYZ में और हमारे हीरो में. बट नो, यहाँ पे दिया क्या है कि ये म्यूटेशंस XYZA में भी थे. ओके, दे वर प्रेजेंट इन द अर्लियर वायरस वर्जन आल्सो, और अभी वाले हीरो में भी है. ओके, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो जो लोग अभी कंफ्यूज्ड है, सिंपल भाषा में बताता हूं मैं. लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम. व्हाट डज इट से? ये जो 3 म्यूटेशंस थे, they are present in this, they are also present in this. That's it. But option D अभी जो आपके सामने है वो क्या बोलता है कि नहीं, they are present only in this, not in this. तो नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है. That is why it cannot be the answer. Okay. Coming to the next question, question 3. Which of the following can be inferred from the passage? ठीक है. So let's once again take a very calm and level-headed look at what the question says. Older H5N1 strain, okay, पुराने जो पंटर थे XYZA वगैरह वगैरह, they have transformed into this newer strain. हमारे हीरो में वो बदले हैं. And both of them belong to the same clade but different cluster. Wow, amazingly worded option. Same clade में है, 2.2.1.2 के ही सब बच्चे हैं वो. बस अभी वाला हीरो डिफरेंट क्लस्टर का है, पुराने वाले हीरो अलग क्लस्टर के XYZA ये जो थे. ओके, और ये गारंटी कहां से लाए कि पुराने वाले ही ने ही ट्रांसफॉर्मेशन करके न्यू बन चुके हैं? तो दिस इज गिवन टू अस इन द 4th पैराग्राफ हियर. ठीक है, कि जो न्यू वायरस है, जो एक डिफरेंट क्लस्टर बना बैठा है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ? उसके पुराने ही भाइयों बहनों से हुआ है, प्रीवियसली सर्कुलेटिंग वायरसेस. प्रीवियस ये XYZA से ही ये बना है. सो दिस इज गुड सॉलिड इंफॉर्मेशन. ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर. ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे और देखेंगे कि दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते आंसर. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ऑप्शन बी सेज. ओल्डर जो स्ट्रेन्स है XYZA, दे हैव नॉट बीन डिटेक्टेड इन इजिप्ट बट न्यू वाला डिटेक्टेड इन इजिप्ट. ये बिल्कुल गलत बात, बहुत गलत बात. क्लियर कट दिया है हमें कि पुराने वाले थे प्रेजेंट इजिप्ट में,
बस ये फर्क है कि अभी वाला जो स्ट्रेन है ये प्रीडोमिनेंट बन चुका है। जो पुराने वायरस थे बस पिछले अक्टूबर से नहीं मिले हैं। अब पिछले अक्टूबर को कितने महीने हुए हैं हम नहीं जानते, 5, 10, 15 महीने, मे बी 10, 12 महीने, वॉट एवर। बट दैट डज नॉट मीन ना कि ये पुराने XYZ जो थे ये कभी थे ही नहीं इजिप्ट में। रादर दे वर देयर, इट इज गिवन इन द पैसेज, सो दैट इज व्हाई नॉट द आंसर। सी, न्यूअर प्रीडोमिनेंट वायरस, मतलब हमारा हीरो अपग्रेडेड वर्जन है कौन से क्लेड का? ओ माय गॉड, 2.2.1.1, डेफिनेटली नॉट। हमारा हीरो तो इस वर्जन का है 1.2, एंड व्हाट इज इट सेइंग? 1.1। बाय बाय। डी, लाइक द नॉन प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन, मतलब XYZ, उसकी तरह ही न्यू वाला हीरो is a part of this clade and belongs to the same cluster. Oops, because of this word same, it gets rejected. It is not from the same cluster, it is from a different cluster. तो A और D actually वन एंड द सेम है, बस ये एक वर्ड सेम की वजह से डी कोलैप्सेस। ओके, so that takes care of question 3. Very quickly, let's go to question 4. Which of the following statement most corresponds to what the passage relates? मतलब इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन दी है उसके इन लाइन कौन सा है? वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, न्यू H5N1, मतलब नया हीरो, नॉट ऑब्जर्व बिफोर बट इमर्ज्ड इन रिसेंट टाइम्स इन इजिप्ट। ओके, ओके, थोड़ी गड़बड़ है इसके अंदर में। ठीक है, कि पहले कभी देखा ही नहीं इसको, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अभी बस इतना दिया है कि दिस न्यू स्ट्रेन हैज बिकम प्रीडोमिनेंट, और इसके ऊपर में रिसर्च चालू है। दैट्स इट। वेदर दिस गाय वाज नॉट ऑब्जर्व्ड एट ऑल प्रीवियसली, हम ये नहीं जानते। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी ट्रिकी रेड फ्लैग टाइप ऑप्शन। ना हम इसको कॉन्फिडेंस से सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कॉन्फिडेंस के साथ में रिजेक्ट कर पा रहे हैं। सो पुट इट ऑन होल्ड, लेट्स सी इफ वी हैव अ बेटर ऑप्शन इन प्लेस। सेकंड ऑप्शन, जो नया हीरो है, इट हैज बीन प्रीडोमिनेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। ओ माय गॉड, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हमें बोला है कि ये रिसेंटली एकदम फैल चुका है इजिप्ट में। ठीक है, पास्ट सेवरल मंथ्स, और ये तो एकदम 15 साल तक लेके चले गया। सॉरी, सेफली रिजेक्टेड। नया हीरो, इट हैज बिकम प्रीडोमिनेंट इन रिसेंट टाइम्स इन इजिप्ट। वाओ, इतना प्यारा, इतना सेफ ऑप्शन और कहाँ मिलेगा? ठीक है, क्लियर कट गिवन हियर, अंडरलाइन फॉर यू इन द थर्ड पैराग्राफ, हैज टू बी द आंसर। स्टिल लेट्स टेक ऑप्शन डी, H5N1। अच्छा देखो ध्यान से, पूरे ब्रॉड वायरस का बात कर रहा है वो। इज एन एवियन वायरस दैट हैज बिकम प्रीडोमिनेंट ओनली इन रिसेंट टाइम्स इन इजिप्ट। हेल नो, जो इसका नया वर्जन है, नया स्ट्रेन है, दैट हैज बिकम प्रीडोमिनेंट रिसेंटली। ये जो वायरस है ये खुद में तो बहुत जमाने से बॉस, 2007 में इसका एक पर्टिकुलर वर्जन आ चुका था वहां पर। It expanded in poultry, then disappeared for some time, blah blah blah. But it has been around for quite a few years now. ठीक है, so that is why not the answer. ऑप्शन ए को आप सेफली रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि मच सेफर ऑप्शन सी इज प्रेजेंट है। Okay, so with this I hope that you have understood what the passage is talking about. Loads of information given, but easily you can break it down by plotting the information in that tree or that, क्या कुछ भी, जो भी डायग्राम जिसमें भी आप प्लॉट कर सको, it makes you very capable of taking on at least 3 out of 4 questions in this passage. ठीक है, so try to emulate this model with other science based passages. As you can see, critical reasoning questions ज्यादा नहीं पूछे जा सकते साइंस बेस्ड पैसेजेस पे। एट मैक्स दे विल आस्क यू कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके दम पे हम क्या क्या बोल सकेंगे, दैट्स इट। इट कैन नॉट टेक यू इन एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव जोन, एंड दैट इज द मेरिट ऑफ सच पैसेजेस। डू नॉट लेट देम गो आउट ऑफ योर हैंड। ओके, तो चलो देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।